Yes, very good afternoon, my dear friends. Yes, good to see you all. So, friends, now I'm basically here coming to your accounts session for the purpose of discussion about a very interesting standard known as AS22. But before I get into that standard, I would like to discuss some interesting elements before I talk about the standard so that it makes more meaningful sense and then we can understand the standard in a better sense. Are we ready, everybody? Now, before I proceed, my dear friends, one thing which I would like to tell you very clearly is something like this, that in accounting, it's not just about your accounting of various entities, your financial statements. That's not the only point that is just important. Your accounting standards play a key role in the presentation of your financial statements. Now, it is always said and done that accounting is an art of recording, classifying, summarizing and analyzing financial statements. A lot of people think that their respective subjects are smart, but let me tell you that without accounting, without the art of accounting, nothing else will work. So accounts play a key important role when it comes to presentation of financial statements. That is the reason why accounting has got a major role to play for the purpose of financial statement. So for example, my dear friends, when you talk about income tax, in income tax, you would have heard about something called PGBP, capital gains. In different heads of income, there's a different computation mechanism. Too much of confusion is involved in different heads of income. But accounting clearly runs on three important principles: debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. We purely run the system on accounting principle and we follow a wonderful system called double entry system for the purpose of preparation of financial statements. Correct? And what is the first step when we talk about preparation of financial statements? The first step in preparation of financial statements is recording of journal entries. So the first step is basically, my dear friends, recording of journal entries. I repeat once again, my dear friends, the first step, so please concentrate, please don't disturb. The first step is basically recording of your journal entries. Once you pass the journal entries, based on the journal entries, we'll prepare the ledger. And based on the ledgers, we prepare our trial balance. Based on the trial balance, we get into P&L account and balance sheet. That's a flow and sequence of events, what happens in accounting system. We'll start with journal, ledger, trial balance, P&L and balance sheet. That's how the flow of accounting system works. Do you agree to that, everybody? Exactly. Now what I want to tell you is something very important before I move forward. That is, there has been a situation where one person has come to my office for interview, a BCom qualified person. I told him, I'll tell you 3-4 transactions. Please tell me journal entries for that. He told, sir, I can't write journal entries, but I'm very good in preparing ledgers. समझेगा उसका डायलॉग? वो भाई साहब बोल रहा है, I am not good in writing journal entries, but I am very good in preparing ledgers. It's a big joke when somebody says that statement, because ledgers are prepared based on the accounting entries what we pass. So how can there be a scenario where a person is telling, I know how to pass ledgers, but I don't know how to pass journal entries? It's a big joke. Journal entry is the base for any accounting thing what we do. Do you all agree to that? Good. Sir, what are the fundamental accounting assumptions? The fundamental accounting assumptions are going concern, consistency, accrual. Sir, do you know this or not? Going concern, consistency and accrual. My dear friends, please tell me what is the meaning of the word going concern? There is always a presumption and there is always a belief that entity will continue. There is a going concern for that entity. What is consistency, beta? Whatever accounting policies are followed by the entity, they are consistently being followed. And whatever accounting policies you follow, AS1
clearly says whatever accounting policies you follow, you disclose them. AS1 title only says disclosure of accounting policies. Correct? What is the third point? Accrual. What does accrual system mean? We will record for all payables as well as receivables. Accrual system is technically also known as mercantile system of accounting. Sit in the front. Come on, sit in the front. Come front, come front. Come front. So accrual system is also called as mercantile system of accounting, where we will record all the payables and receivables. And accounting principle clearly says that we follow this accrual system, also called mercantile system, where we will record payables and receivables. There is also one more system called cash system of accounting, but what we majorly follow is accrual system. Do you agree to that? Next, I have a question before I proceed further. Sir, heard of one word called conservatism? Technically, hold on, please don't talk, I said. Conservatism, technically also called as prudence. Sune a word prudence? Somebody please reply, what does that word prudence mean? Accounts class में बैठे और पढ़ाई कर रहे एडवांस अकाउंटिंग का, अब प्रूडेंस क्या पूछ रहे तो जवाब से चुप बैठ गए. बोलो बेटा. Excellent. So prudence basically means accountant's blood. An accountant's blood is always with the principle of conservatism or prudence, which technically means that all anticipated losses are recorded, but anticipated incomes are not recorded. That is called conservatism principle, also called as prudence. Clear, friends? Now, first and foremost important thing, before I proceed further, is that you should understand why I am here today instead of Sushil sir. That logic you have to understand first before I proceed further. That logic is something like this. We are going to talk about an interesting standard called Accounting Standard 22. Now, accounting standards are mandatorily to be followed, and they are basically like a guidance note for preparation of financial statement and disclosure at the end of financial statement. For the purpose of presentation and for the purpose of disclosure, accounting standards are followed. For example, AS2 talks about valuation of inventory. AS10 talks about property, plant and equipment. And AS16 already taught to you borrowing cost, which clearly talks about something called qualifying asset, which takes substantial period of time. In exam, if you write the word which takes too much of period of time, 0 marks will come. You cannot afford to write the words too much of period of time. You have to write that word substantial. Words are very important when it comes to accounting standard. AS10 एग्जाम में जाके फिक्स एसेट बोलेंगे तो 1 मार्क भी नहीं आएगा. The language should be property, plant and equipment. Clear everybody? AS13 हो गया आपका. AS13 stands for what? Accounting for investments, investment accounting. AS12 is done. AS12 talks about what? Government grants. So how do we give treatment for that government grants is given by accounting standard 12. So like this, my dear friends, for impairment there is AS28. Provisions, contingent liability, there is AS29. So for every set of concept, there is an accounting standard which talks about the presentation and the disclosure in the financial statements. In the same way, today, I am going to teach you a very interesting standard. Okay? And of course, very important practically. In exam, sometimes it keeps coming in the exam for 4 marks. So it's an important concept which we can't take a chance. And let me tell you, my dear friends, I am going to discuss with you a wonderful standard known as AS22. AS22, which stands for Accounting for Taxes on Income. Somebody says related parties. That is AS18. Please. AS22. What's the title, beta? Accounting for Taxes on Income. Sir, the word is not taxation, accounting and all. In exam, some students write whatever language they want. Don't replace the words. What is the word used here? Accounting for taxes on income. And we are not talking about GST. We are talking only about income tax. That's the reason why when a taxation person speaks, this standard has more meaningful value. That is the reason why I am right here in front of you.
I think you got the logic why I came today. Clear? Online friends? समझे ना आप लोग? Please adjust कर लो, ठीक है? शिवा तेजा, thank you. So AS22 stands for what? Accounting for taxes on income. Accounting for what? Taxes on income. And we are nowhere talking about GST. We are talking purely about income tax. Are we clear, everybody? Done. I'll take a simple example first. With that help of that example, I'll explain the concept. Then we'll discuss some very, very interesting questions and we'll complete the standard. Are we clear, everybody? First, listen. Everybody carefully listen. Sir, there is one company called PQR Limited. Okay? What has happened is, let's say for example, their profit before depreciation is, let us say, 10 lakhs. Some are busy in talking, please don't do that better. Profit before depreciation is 10 lakh, depreciation is 2 lakhs. Net profit is 8 lakhs. Now my basic fundamental question to you, which I'll ask you is that, this is your accounting working. This is based on your accounting principles. Based on your accounting, we have computed the net profit. And this depreciation what you have taken is as per your Companies Act. As per your Companies Act. Otherwise, depreciation as per your accounts. It's an accounting depreciation. It's what depreciation? Accounting depreciation. But in income tax, when I calculate business income, technically called as PGBP, which stands for Profits and Gains from Business or Profession. बोलो बेटा PGB का full form क्या है बेटा? Profits and gains from business or profession. When I talk about profits and gains from business or profession, in that there is one brilliant section called section 32, which deals with the concept of depreciation. And income tax follows something called block of assets, where depreciation is not charged asset by asset, it is charged based on block of assets. Where we take opening WDV, we will add the asset what we have purchased, we will reduce asset what we have sold, the balance what we get is called closing WDV. You will learn more detail in your tax class. Okay? I'll not talk more about it. But one thing which I'll make you recollect, which you would have heard, that is, in the first year of purchase, if asset is used for 180 days or more, we will claim full depreciation. If it is used for less than 180 days, we will claim only half depreciation. That's your taxation, which is crazy. एक दिन भी यूज करे तो वो बोल रहा है आधा डेप्रिसिएशन ले लो. ऐसा कैसे लेंगे भाई? अकाउंट्स क्या बोलता है? एक दिन यूज करे तो एक दिन का ही डेप्रिसिएशन लेंगे. So in accounting, my dear friends, let us say if asset is used for 3 months, we'll get depreciation only for 3 months, but there they take for half. You getting what I'm saying, guys? So now, so by this, what basic point you have to get is that accounting depreciation is different. Depreciation as per income tax is different. Barabar na beta? Now, how do we calculate business income under PGBP beta? Bolo. We will start with what? Net profit we start with. We will add back depreciation as per books. Kitna beta? 2 lakhs. We will reduce depreciation as per income tax. समझ में जा रहा ना बेटा? समझो बेटा, depreciation as per income tax 3 लाख रुपए. एक काम करते, depreciation as per income tax 1 लाख ही लेते, कम रखते अपन. ज्यादा रख के भी एक एग्जाम्पल लेंगे, डोंट वरी. Yeah? Now tell me, what is the figure beta? 9 lakhs. You want calculator for this? Very good. Scientific calculator, use it. Yeah. So profit figure is 9 lakh, my dear friends. Now my basic question, the basic question which I'll ask you is something like this. The basic question which I'm going to ask you, my dear friends, is something like this. That is, in income tax, will you pay income tax on 9 lakh or will you pay income tax on 8 lakhs? सोच के बोलो एक सेकंड. Will you pay income tax on 8 lakh or will you pay income tax on
किस पे टैक्स पे करेंगे? That means basically your accounting profit is only 8 lakhs, but your profit as per taxation is, getting my point everybody? Now listen to the language. This 8 lakhs is technically called accounting income. क्या बोलते बेटा? Accounting income. Accounting income is nothing but profit as per your accounts. And this 9 lakhs is called taxable income. But accounting income means what? Income as per accounts. Taxable income means what? Income as per income tax. And ultimately we are going to pay tax only on, बोलो बेटा, taxable income. बेटा समझ में आ रहा है क्या बेटा? Everyone sir? Excellent. सुनो, अभी carefully सुनो. Everybody, you listen very carefully. Next interesting example, listen. We'll write all the points, don't worry. Sir, listen. Sir, there is expert who made payment to Shiva Teja. Expert made payment to what? Shiva Teja. Let us say they are paying 10 lakhs to Shiva Teja. Now, an expert is making payment of 10 lakh rupees to Shiva Teja, my dear friends. There is some responsibility which is put on the head of expert. What is that expert is supposed to do is, expert has to do TDS under one brilliant section called 194J at the rate of 10%. Because when payment is made to a professional, there is a TDS rate of 10% under section 194J. समझ में आ रहा है क्या बेटा? दोस्तों, मैं सिंपल, जो अगर बाई चांस आप सुने नहीं TDS आपकी क्लासेस में, पॉइंट ये है बेटा, अगर कोई बंदा प्रोफेशनल को पेमेंट दे रहा है, उसको 10% TDS करके उसको पेमेंट करना पड़ता है. And the TDS under 194J will apply if the payment is more than 30,000. सब लोगों को समझ में आएगा? डन. तो एक्सपर्ट का जिम्मेदारी क्या है? जब 10 लाख पेमेंट करेंगे, 1 लाख माइनस करके 9 लाख शिवतेजा को देना है. 9 लाख किसको देना है? शिवतेजा को देना है. और 1 लाख गवर्नमेंट को पे करना है. 1 लाख गवर्नमेंट को पे करना है. ये किसका जिम्मेदारी है? It is the responsibility of expert to ensure that they'll do the TDS and pay that TDS to the government. Are we getting clarity? Now listen to the point very clearly. Under PGBP, my dear friends, we have got one interesting section called 40A1A. 40A1A, which says, when payment is made to a resident, TDS is not done or done but not paid before due date of return of income, then 30% will be disallowed. This is what is the provision given by section 40A1A, which says that, भाई साहब, Mr. एक्सपर्ट कंपनी, आप जब शिवतेजा को पे कर रहे, आपकी जिम्मेदारी बनता है कि टीडीएस करो, और जो टीडीएस करे वो गवर्नमेंट को पे करो बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम. इफ यू डोंट डू दैट, 30% इज व्हाट? डिसअलाउड. समझे ना बेटा? सबको क्लियर है ये कहानी? आप सुनो. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, एक्सपर्ट, they have done TDS. Okay? And let me tell you, expert is a company. And this transaction happened in previous year 23-24. 23-24. अब मुझे बोलो बेटा, एक्सपर्ट का रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट क्या है दोस्तों? एक्सपर्ट का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम क्या है बेटा? 31st October 24. That is because return of income due date is generally 31st July, but 31st October in 4 cases. I mean 3 cases actually. Number 1 is company. Number 2, other than company which is subject to tax audit. Business अगर 1 crore के ऊपर है तो, profession 50 लाख के ऊपर है तो. तीसरा केस, partner of the firm, if the firm is subject to audit. समझे क्या बेटा? ये तीनों केस में ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम क्या है? 31st October. बराबर है बेटा? अब सुनो सीन क्या है. सुनो बेटा, एक्सपर्ट, दे हैव डन टीडीएस. यू माइट थिंक दैट आई एम टीचिंग यू टैक्सेशन ओनली, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ पर्पस व्हाई आई एम टीचिंग दिस.
I'll link this with your AS22 now very soon. Within minutes, AS22 will enter into picture. Listen now. They have done the TDS. Did they do the TDS? Yes. Sir, what TDS kiye kya? 100% it is very clear that they have done the TDS. Now, jo TDS kiye beta, this TDS is paid to government. This TDS is paid to government. They have done the TDS in 23-24 only. Sir, 23-24 only. 23-24 only they have done the TDS. And that TDS is paid to the government on 2nd November 24. And it's okay, relax, don't worry. 2nd November 24. When it is 2nd November 24, what is the tax impact beta? बताओ मुझे टैक्स में क्या होगा फिर अभी? टैक्स में क्या होगा? 30%, which is nothing but 3 lakhs. अरे 30% nothing but 3 lakhs. This will be disallowed. In which year? 23-24. समझ में आ रहा है क्या बेटा? This is disallowed in 23-24. But the same 3 lakhs is allowed in 24-25. Excellent. Beta suno abhi. Wonderful point actually. Listen. So the point what I am trying to tell you is that 23-24 में हमने 3 लाख को डिसअलाउ कर दिया. क्यों डिसअलाउ किया? इनकम टैक्स का एक प्रोविजन बोलता है कि भाई अगर तू टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर पे नहीं किया 30% डिसअलाउ करेंगे. और जो वही 30% अगले साल में अलाउ कर रहे. अगले साल अलाउ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम के बाद तो भी कम से कम पे तो किया ना. सर अगर टीडीएस करता ही नहीं था तो क्या होता? अगर टीडीएस करते ही नहीं थे तो क्या होता? 30% डिसअलाउड. अलाउड नेक्स्ट ईयर बोलेंगे क्या? अरे सुने क्या मेरा पॉइंट वापस बोलता. सुनो बेटा. अगेन आई रिपीट. लिसन सर, इफ टीडीएस इज नॉट डन एट ऑल व्हाट विल हैपन? 30% डिसअलाउड. वहां पे बोलेंगे क्या? द सेम 30% अलाउड इन नेक्स्ट ईयर, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं. वो किस में बोलेंगे? टीडीएस करके रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट के बाद पे करे. समझे ना बेटा? स्पीक आउट. This is called timing difference as per AS22. This is called what difference beta? Timing difference as per AS22. Sir, what difference it is? Timing difference. मतलब सर आप मुझे बताओ, अब जो 3 लाख को हम डिसअलाउ बोल रहे हैं, डिसअलाउ मतलब क्या करेंगे अपन? बोलो आप. डिसअलाउ मतलब प्रॉफिट को ऐड करेंगे. डिसअलाउ मतलब प्रॉफिट को ऐड करेंगे. जब मैं बोल रहा हूं डिसअलाउ मतलब प्रॉफिट को ऐड करेंगे, इसका मीनिंग क्या है? आपका प्रॉफिट टैक्स के हिसाब से बढ़ जाएगा. प्रॉफिट टैक्स के हिसाब से बढ़ जाएगा. बट अगले साल अकाउंट्स का प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, टैक्स का प्रॉफिट कम रहेगा. अरे समझ में आ रहा है क्या? सर इसको एक्सटेंशन देते हैं अपन. ये एग्जाम्पल को एक्सटेंड करेंगे अपन. दैट इज सर ये एग्जाम्पल का एक्सटेंशन दे रहा हूं, सुन लो बेटा. वी आर इन 23-24. ठीक है ना बेटा? दोस्तों लेट्स से फॉर एग्जाम्पल नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपए. कितना डिसअलाउ करे भाई? कितना डिसअलाउ करे? 3 लाख. मतलब फिगर क्या हो गया आपका? 11 लाख. अरे ऐड करेंगे रे पागल. 11 लाख. सर दिस 8 lakhs is profit as per accounts, but 11 lakhs is profit as per income tax. अपने को 11 पे टैक्स भरना पड़ता ना. अब सुनो सीन क्या है. अगले साल जब आए बेटा, प्रीवियस ईयर 24-25, लेट अस से profit as per accounts is 10 lakh. Profit as per account is 10 lakhs. But my profit as per income tax will be 10 lakhs minus 3 lakh, which is nothing but 7 lakhs. मतलब एक साल में वो ज्यादा है, अगले साल में ये तुरंत कम हो गया. That is called timing difference. It's just a matter of time. It's called what difference beta? Timing difference. Timing difference. अब सुनो मेरी बात, अब आएगा कहानी.
When I say that there is a timing difference, my dear friends, first year, that means this 23-24 year, accounts के हिसाब से प्रॉफिट कितना है? अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना है बेटा? 8 lakhs. बट टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना है? 11 लाख. जब गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करेंगे 8 पे भरेंगे या 11 पे भरेंगे? 11 पे भरेंगे. अगर 8 पे भरते थे तो कम भरते थे ना. अभी ज्यादा भरना पड़ रहा ना. अभी ज्यादा भर रहे मतलब रोने का बात है क्या? नहीं. क्यों रोने की बात नहीं है? क्योंकि अगले साल अकाउंट्स में ज्यादा है, टैक्स में कम है. तो अगले साल तो टैक्स कम भरेंगे ना. स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स. एवरीबॉडी सर, दैट इज कॉल्ड deferred. That is called deferred. That is called deferred. You're getting my point? Sir, in simple terms, deferred means what? Postponed. In simple terms, deferred means postponed. Are we getting clarity, beta? Now, a point you have to understand is that this difference is technically called as timing difference. क्या बोलते बेटा इसको? Timing difference. Clear है क्या बेटा? अब सुनो, कहानी खत्म नहीं हुआ. एक और एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आई विल टॉक अबाउट ऑल द टर्मिनोलॉजी इन AS22. टर्मिनोलॉजी मींस अकाउंटिंग में क्या क्या लैंग्वेज है, क्या क्या शब्द है, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, देखो बेटा. P&L account is drawn. It is not a company. That's why I prepared T format. Don't put that faces and tell me that sir ऐसा आना चाहिए ना. ये कंपनी नहीं है. ठीक है क्या? 8 lakhs is net profits. ठीक है? And in P&L account there is to penalty 10 lakhs. This penalty he paid because he has done violation of law. But as per accounts, as per our beautiful accounts, we don't make a difference between whether it is violation of law or not in violation of law. For us, it is only one thing. If it is an expense, we'll debit. If it is an income, we'll credit. That's it. We'll not go into any legality and all, because we look at something called accounting principles. अब वो लीगल है, इलीगल है, किसके लिए, रेंट है, हाउस प्रॉपर्टी है, स्टैंडर्ड एक्शन है, मेरे को लेना देना नहीं है भाई. आई एम ओनली कंसर्न विथ what is coming, what is going, who is receiver, who is the giver, what is expense, what is income. That's it. मेरे को बाकी सबसे कुछ लेना देना नहीं है. आप कर लो टैक्स में जो करना है कर लो. वहां पे डिविडेंड अगर आया उधर लेस करके अदर सोर्स में दिखाएंगे, वो सब उधर करेंगे. बट इधर डिविडेंड आया तो क्या भाई, इनकम ही तो है, मैं लूंगा P&L में क्रेडिट साइड में. आप टैक्स में करते हैं, आप डिविडेंड को लेस करेंगे, दिखाएंगे अदर सोर्सेस में. करते ना आप लोग टैक्स में ऐसा? अकाउंट्स में आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता. इन अकाउंट्स वी आर वेरी क्लियर. इफ इट्स एन इनकम, credit the income. If it's an expense, debit the expense. That's it. We are so clear and so clean. Next. So net profit is 8 lakhs, and in P&L account there is a penalty that is debited in P&L account, that is what's 10 lakhs. Now tell me, as per accounting principle, we do something called debit all expenses. Is it an expense? Yes. Did we debit? Yes. एक काम करते, इसको फिगर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते. 2 lakhs. It's an expense. We debited to P&L account. कुछ गलत करे क्या अकाउंट्स में? बोलो जान. टैक्स में क्या करेंगे बेटा? बोलो, आपका चमत्कार. टैक्स में क्या करते हैं आप लोग? नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स 8 lakhs. बेटा आपको यह समझना है, आपको लग रहा है कि टैक्स ऐसा है, बट आपको क्लैरिटी होना चाहिए. नेट प्रॉफिट एज P&L अकाउंट, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो टैक्स में आ रहा है वो अकाउंट से आ रहा है. याद रख लो ये चीज. नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट कितना है बेटा फिगर? 8 lakhs. क्लियर ना? हाँ, वो नहीं तो क्या करेंगे आप? इसको हम ऐड करेंगे. सर अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग मैन. We'll never use the word chartered taxation. It's a chartered accountant. Correct, no? Get back, yes. So net profit as a P&L account. To that, we will add back what, my dear friends? Penalty. Why? In your taxation, there is a crazy section called 37(1), which says that any penalty which is in violation of law, that is not allowed. Speak out. Add back कर दिए 2 लाख. फिगर आएगा 10 लाख. अब ये 10 लाख पे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे. अब आप मुझे बताओ बेटा,
ये 2 लाख आप जो ऐड करें यहां पे, ये ऐसा कुछ है क्या? 2 लाख इस साल ऐड किए, अगले साल लेस करेंगे? स्पीक आउट। 2 लाख ये साल ऐड कर दिए, अगले साल लेस करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? Then that is called permanent difference. What do you call it? Permanent difference. Previous point, what was it, my dear friends? Timing difference. I hope you are getting clarity. Everybody, sir. This is called what difference? नीचे जो लिखे क्या था? This is what? Permanent difference. This is what? Timing difference. And your AS22 will have effect only if it is a timing difference. Never use the word temporary difference. That is a nonsense word. We have to use the word only, what word, my dear friends? Timing difference. AS22 has got nothing to do with permanent differences. AS22 has got to do only and only with timing differences. Clear, my dear friends? Now let me tell you what is the meaning of the word timing difference. Timing differences are those differences which originate in one period, and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Come on, beta. What is timing difference? Timing difference are those differences which originate in, बोला ऐसा बैठो मत, originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period. यहाँ पे हो रहा ना बेटा, यहाँ पे देखे तो आप 3 लाख को पहले एड बैक करें, अगले साल में 3 लाख को लेस कर दिए, तो उसका इफेक्ट रिवर्स आ गया ना बेटा. That is called what difference? What do you call that? Timing difference. बराबर ना बेटा? Come on, define timing difference. बैठ ना भाई, आराम से बैठ. हम रिवर्स कर सकते नहीं, जो रिवर्स होगा वही टाइमिंग डिफरेंस है. Come on, my dear friends. Timing difference. Come on. Tell the answer. Timing difference are those differences which originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. समझे क्या? Come on. What is timing difference? Timing differences are those differences which originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period. Now, what is permanent difference? You know the answer. Which originate in one period and are not capable of reversal in one or more subsequent periods. And AS22 title? Accounting of taxes. What? Accounting of taxes. Accounting for what, sir? Accounting for taxes on income. And this standard talks only about those cases which are timing differences, but not those cases which are permanent differences. Are we getting clarity, everybody? Dosto, bolo. Listen now. Relax, relax. Relax, control. I know there are some problems. It's okay. Relax. Sir, listen carefully. Let us say for a second, profit as per accounts is 8 lakhs. Okay? And net profit as per accounts is 8 lakhs. Depreciation as per books debited to PL is 3 lakh. Depreciation as per income tax is 2 lakh. Don't talk, my dear friends, please concentrate. Sir, this 8 lakhs, what do we call it? Profit as per books. But उसका एक technical नाम बोला था मैं. That is called accounting income. Don't use the word accounting profit. We call it as accounting income. Accounting income. And what is the profit as per income tax, beta?
8 lakhs, we'll add back 3 lakh as per books, and we'll reduce 2 lakh as per income tax, which is nothing but 9 lakhs. And this 9 lakh is called taxable income. Accounting income means profit as per accounts. Taxable income means profit as per income tax. बेटा समझ में आ रहा है क्या? Now on this taxable income, I will calculate income tax. For simplicity, let us say tax rate is 30%. Don't tell me surcharge, HEC, all that you do in taxation. All that they'll not ask in accounts. In accounts, they'll only give you in the question what is the tax rate. Okay? You do not apply your brains of more than 2 crore, more than 5 crores, marginal relief. Nahi, zurat nahi. Clear na beta? All that you do in tax. We're back. So what is the tax rate we have assumed? 30%. Correct, my dear friends? Speak out. Actually, books के हिसाब से प्रॉफिट कितना है? क्या हो गया बेटा? Actually books के हिसाब से प्रॉफिट कितना है? 8 lakhs. Books के हिसाब से प्रॉफिट है 8 lakhs. But tax के हिसाब से प्रॉफिट कितना है? तो मुझे 9 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा ना? My tax what I will pay is 9 lakh into 30%, which is nothing but 2.7 lakhs. 2.7 lakhs. That is what I am supposed to pay to the government. Speak out. Am I paying more? I am asking one question. Listen to my question very clearly. Am I paying more or am I paying less when compared to accounting profits? क्वेश्चन समझे क्या बेटा? मैं क्या पूछा? वापस बोल रहा बेटा. Am I paying more or am I paying less when compared to accounting profit? Definitely I am paying more. अगर 8 लाख पे 30% निकालते तो उसको क्या बोलते हैं? 2.4 lakhs. बट मैं कितना पे कर रहा हूं? 2 point. Now tell me, extra, how much did I pay, sir? Extra what I paid is nothing but 30,000. How did I get this 30,000? 2.7 lakh minus 2.4 lakhs. The technically I am paying 30,000 extra. मेरा बुक्स के हिसाब से प्रॉफिट है 2.4 lakhs. टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट है बुक्स के हिसाब से टैक्स है 2.4 लाख. टैक्स के हिसाब से टैक्स है 2.7 लाख. बट मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं 2.7 नॉट 2.4. तो एक्स्ट्रा कितना पे कर रहा हूं मैं? बराबर ना? That 30,000 what you are paying extra to the government, that is called deferred tax asset. What do we call that beta? Deferred tax asset. When we are paying more, we are creating an asset which will reverse in the future. सर फ्यूचर में सर आप सिंपल सी बात बोलो यार, सिंपल सी बात बोलो, सीधी सी बात पूछता आपसे मैं. अभी ये टाइमिंग डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस है? डेफिनेटली टाइमिंग डिफरेंस है. दोस्तों अगर परमानेंट डिफरेंस है तो डेफर्ड टैक्स का कहानी आता ही नहीं. डेफर्ड टैक्स का कहानी आएगा सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस में. ये टाइमिंग डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस है? टाइमिंग डिफरेंस है. बराबर है ना? अब ये जो टाइमिंग डिफरेंस है, मैं आज के दिन ज्यादा पे कर रहा हूं या कम पे कर रहा हूं? ज्यादा पे कर रहा हूं. अभी ज्यादा पे कर रहा हूं मतलब फ्यूचर में जाके कम पे करने वाला हूं ना? Speak out. I am paying today more. I repeat once again. Local language I will talk. Simple English I will talk. I am paying today more so that in future I will pay less. Then what I extra pay today is called asset. Because asset is something which is an economic benefit derived in the future. When you entered into commerce, you would have heard this word. Asset is something like an economic benefit for future. Are we clear with this point, everybody? Speak out. Some people who have lack of knowledge and lack of clarity, they prepare shortcut, telling that tax का ज्यादा है, इसका कम है, deferred tax asset, इसका ज्यादा है, इसका कम है, deferred tax liability. करो एग्जाम में बैठ के. अरे थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो भाई. ये क्या याद रखने का तरीका है? मतलब कुछ भी लिस्ट बना के, कुछ भी कचरा बना के याद करेंगे क्या यार? We should get the concept right. Now tell me, I'll ask you one question. Let's say for example, accounting profit is 8 lakhs. Don't talk asset. Accounting profit is 8 lakhs. Accounting profit is 8 lakhs. Profit as per income tax is 7 lakh. और दोनों का 1 लाख का जो फर्क है
दैट इज बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस. मैं ही बोल रहा हूं टाइमिंग डिफरेंस है. ठीक है ना बेटा? दोस्तों क्लियर है क्या? अब आप मुझे बोलो, आज के दिन टैक्स कम भरेंगे या ज्यादा भरेंगे? कम भरेंगे. कितना कम भरे? 1 लाख के ऊपर कम भरे. समझो 1 लाख पर 30% है तो कितना? 30,000. 30,000 कम भरे ना बेटा? आज कम भरे मतलब कल ज्यादा भरने वाले. You create something called deferred tax liability. I think it's making sense for all of you. We are in the sequence. Everybody, sir. Now, in simple times, let me talk to you now. Accounting income. Accounting income. Taxable income. DTL or DTA. DTL stands for deferred tax liability. DTA stands for deferred tax asset. So let's say beta, and these are all because of timing differences only. Student is asking, सर अगर परमानेंट डिफरेंस है तो क्या करेंगे? परमानेंट डिफरेंस है तो कुछ भी नहीं करेंगे, ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता. AS22 does not apply in case of timing, in case of permanent differences. It applies only in case of टाइमिंग डिफरेंसेस. समझ में आ रहा है क्या बेटा? लेट्स से अकाउंटिंग इनकम 10 लाख है, टैक्सेबल इनकम 12 लाख है. व्हाट डू यू क्रिएट? अच्छा, एक और लाइन ऐड कर देते, मैं पूरा क्लैरिटी दूंगा इसमें. रुक जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ 1 सेकंड. ठीक है? अज्यूम फॉर अ सेकंड tax rate is 30%. Now I'll take the column as DTL or DTA. बोलो बेटा क्या आएगा? बोलो. DTA, which is nothing but 2 lakh into 30%, which comes to 60,000. समझे क्या? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अकाउंटिंग इनकम 12 लाख है, टैक्स का इनकम 11 लाख है. Deferred tax liability, which is 1 lakh into 30%, which comes to 30,000. Accounting income 5 lakh है, tax का income 8 lakh है. DTA, which is 3 lakh into 30%, which comes to 90,000. I think we reached that stage where we understood what is the standard talking about. That is why I had to give all those examples of time difference, permanent difference and all. Now I'll ask you some questions. Think properly and tell. Tell me guys, AS22, what's the title? Accounting for taxes on income. Does AS22 apply for permanent differences? AS22 is only to account for timing differences, where the tax is deferred. Where the tax is deferred. Today if we are paying more, we will create deferred tax asset. Today we are paying less, we will create deferred tax liability. कॉमन सेंस की बात है. आज कम पे कर रहे मतलब आगे जाके ज्यादा पे करना है, तो हम बनाएंगे लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. आज ही ज्यादा पे कर दे मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट. आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट एवरीवन? ऑल ऑफ अस माय डियर फ्रेंड्स. दोस्तों प्लीज कुछ तो बोलो. सबको समझ में आया क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम. Clear? Pakka? Sure? Now let's say for example something like this. Last example, then I'll make you write some points. क्या हुआ? लिखते नहीं आप लोग? अकाउंट्स में लिखते नहीं आप? अपने को लिखने की आदत ही नहीं है क्या? एएस का समझ नोट्स बनाते ना, क्लास में लिखते ना? अच्छा आप खुद कर लेते क्या? अच्छा ठीक है, पर ये तो अपन लिखेंगे. ठीक है, आ जाओ. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. इफ यू वांट 2 minutes यू कैन डू लाइक दिस एंड देन राइट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, गेट बैक. लिसन, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, as per accounts your profit is 8 lakhs. Sir, don't talk please. And as per tax, profit is 6 lakhs.
and the rate of tax is 30%, and the difference is because of timing. It's not because of permanent. So समझ में आ रहा है बेटा? If it is permanent difference, we will not talk about AS22. करेक्ट? अब आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करेंगे, वापस बोल रहा बेटा, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करेंगे, किसको पर पे करेंगे? विदाउट एनी सेकेंड थॉट, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करेंगे 6 लाख पे 30% करेंगे 1.8 lakhs. This 1.8 lakhs is technically what we pay to the government. What we pay to the? This is called current tax. This is called what beta? Current tax. Current tax. अब ये दोनों की डिफरेंस जो है वो टाइमिंग डिफरेंस है या परमानेंट डिफरेंस है? दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, is it because of timing difference or is it because of permanent difference? Timing difference. So will AS22 come into picture? Yes. What is the difference, my dear friend? 2 lakh. Correct? That into, which is nothing but, that into 30% is nothing but 60,000. This is nothing but deferred tax. Liability asset? Huh? Liability. Very good. Smart people. Correct na beta? Now, current tax. Current tax plus deferred tax. प्लस मतलब कभी माइनस भी हो सकता है अगर असेट है तो. करंट टैक्स प्लस व्हाट बेटा? डेफर्ड टैक्स. ऑफिस मेरा come on, get back, my dear friends. So friends, what I was trying to tell you is that whatever tax we are paying on the profit as per income tax, that is called what tax beta? Current tax. And the difference between those two is how much? 2 lakh. On that 2 lakh 30%, that is called what, my dear friends? Deferred tax. Current tax plus deferred tax. Beta, please don't talk. Current tax plus deferred tax total is how much, my dear friends? 2.4 lakhs. This is called tax expense. क्या बोलते बेटा उसको? Tax expense. What do we call it? Tax expense. Obviously we call it tax expense because if you apply basic logic, common sense, what is the profit as per accounts? What is profit as per accounts? 8 lakh. 8 lakh का 30% कितना है? 240. That 240 is nothing but your tax expense. 8 lakh का 30% is 240. That 240 is nothing but your tax expense. And out of the 240, 180 is your current tax, what you have to pay to the government. 180 is current tax, what you have to pay to the government. 60 is nothing but your deferred tax. I think we got a clarity on this point. Everyone, my dear friends. आपकी ये बुक में P&L अकाउंट का फॉर्मेट है क्या? कौन सी बुक में P&L फॉर्मेट? Yeah, one second. नोटबुक में नहीं जरूरत नहीं. एक सेकंड. Just only focus on what is relevant for you. Rest all things you ignore. Okay? Sir, this is basically, this is how a P&L account looks.
for a company. You can see there is something called revenue from operations, other income, total revenue, then expenses, changes in material and contract cost, changes in inventory, employee benefit expense, depreciation, amortization, finance cost, power and fuel, other expense. अब यही पढ़े ना आप लोग? Wonderful. Profit before exceptional items if any, profit before extraordinary items if any, then we get something called PBT, which stands for profit before. अब देखो नीचे क्या है. Below profit before tax, you can find that there is something called current tax as well as deferred tax. Current tax is nothing but the tax on profit as per income tax. ठीक है ना बेटा? और आपको डाउट आ सकता है, सर ये डेफर्ड टैक्स का फिगर कैसा आया? कैसा है मतलब, समझो अकाउंट्स का प्रॉफिट 100 रुपए, अकाउंट्स का प्रॉफिट 100 रुपए, टैक्स का प्रॉफिट 120 है. ये 20 रुपए इंटू टैक्स रेट, 20 रुपए इंटू टैक्स रेट. That 20 रुपए इंटू टैक्स रेट will get your deferred tax. I think you got the clarity on this. And this current tax plus deferred tax together, we will call it as tax expense. क्या बोले बेटा उसको? Tax expense. Sir, I believe that you are getting clarity on this point. Everybody, please reply, my dear friends. Pakka? Good. Can we write some points or you will? तो फिर आपको ये नोट्स कैसे करूं? आपको ये नोट्स भेज दूं क्या आपको? अभी लिख लेते? ठीक है, लिख लो अभी फिर. हाँ, चेक करो. बुक नहीं है तो 2 पेपर लेके निको, बाद में चिपकाओ. ठीक है, इतना रोना मत. इट्स ओके, होता है. चलेगा ना बेटा? ठीक है ना? चेहरा मत बनाओ अभी ऐसा गुस्से में. सर, कैन वी प्रोसीड? सर, आई जस्ट गिव ए सिनॉप्सिस सर. पूरा पॉइंट्स नहीं लिखाऊंगा आपसे मैं, सिर्फ समरी बना रहे सर. अब वो भी नहीं चाहिए मतलब आपका ही नुकसान है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बोलू क्या? अपन सिर्फ समरी लिखने वाले बस, और कुछ नहीं. Put the title AS22. AS22 title accounting for. AS22 title accounting for taxes on income. Accounting for what beta? Taxes on income. First point. This standard deals with this standard deals with accounting for. The standard deals with accounting for difference in. The standard deals with accounting for difference in accounting income. Difference in accounting income. The standard क्या लिखा? Accounting for differences in accounting income and taxable income. Accounting income and taxable income on account of
on account of timing differences. On account of what beta? Timing differences. Sir, hardly I'll make you write 7-8 points. एक पेज में खत्म कर दूंगा मैं. But synopsis चाहिए, उसके लिए लिखा रहा मैं आपको. समझ गया ना? Done. Second point. Accounting income means the profit reported. Accounting income means the profit reported in P&L account. Accounting income means the profit reported in P&L account. Next point. Taxable income means profit determined. Taxable income means profit determined in accordance with income tax laws. In accordance with what beta? Income tax laws. Let's got the point, everybody? Next. Income tax laws means LAWS. आप LOSS लिख दिए क्या? In accordance with income tax laws. LAWS. Next point. Timing differences means those differences which originate in one period. Timing differences means those differences which originate in one period, and are capable of reversal. And are capable of what beta? Reversal in one or more. And are capable of reversal in one or more subsequent period. Next point. In order to account for timing differences, deferred tax. In order to account for timing differences, deferred. So deferred means what? Postponed, correct? No? Deferred tax asset or deferred tax liability is created. Friends, समझे क्या? In order to account for timing differences, deferred tax asset or deferred tax liability is created. Next point. If accounting income is less than taxable income, if accounting income is less than what beta? Taxable income. If accounting income is less than taxable income, then बोलो deferred tax कौन सा? बोलो सोच के बोलो. Asset only? Then deferred tax asset is created. Next point. If accounting income
is more than if accounting income is more than taxable income. If accounting income is more than क्या बेटा? Taxable income. Then बोलो. Deferred tax liability is created. So getting the common sense right? Then deferred tax liability is created. Next point. If accounting loss, इस बार इनकम नहीं बोल रहा हूं मैं, लॉस बोल रहा हूं, समझेगा बेटा? If accounting loss is less than, if accounting loss is less than taxable loss, सोचो अभी क्या होगा? अकाउंटिंग लॉस इज लेस देन टैक्सेबल लॉस, मतलब टैक्स में लॉस कम दिख रहा है. टैक्स में लॉस कम दिख रहा है मतलब आज ज्यादा से मैं क्या लाइन लिया? इफ अकाउंटिंग लॉस इज लेस देन टैक्सेबल लॉस मतलब क्या है? अकाउंट्स में सर सुनो बेटा, अकाउंट्स में आपके पास 15 लाख का लॉस है, बट टैक्स के हिसाब से 12 लाख का लॉस है, तो क्या आएगा? कम बोला क्या मैं? अकाउंटिंग लॉस इज लेस देन टैक्सेबल लॉस बोला क्या? ठीक है. अकाउंटिंग में लॉस 15 लाख है, टैक्स में लॉस 18 लाख है. डिफर्ड टैक्स क्यों? क्योंकि लॉजिक बोल रहा हूं. वो लॉजिक ये है कि एक्चुअली जो अगर अपने पास इनकम है 15 लाख सेट ऑफ करने की जगह अपन 18 लाख सेट ऑफ कर रहे. 18 लाख सेट ऑफ कर रहे मतलब आज के दिन टैक्स कम पे कर रहे, तो व्हाट विल कम इनटू पिक्चर? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. ये इनकम का रिवर्स इक्वेशन है भाई. अरे अगर टैक्स का इनकम ज्यादा है तो डिफर्ड टैक्स असेट आता, टैक्स का लॉस ज्यादा है मतलब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा. फिर आप ज्यादा सेट ऑफ कर लिए, बराबर ना बेटा? चलो कंटिन्यू. क्या लिखा आप वापस बोलो ना बेटा? इफ अकाउंटिंग लॉस इज लेस देन, if accounting loss is less than taxable loss, correct लिखे अपन. If accounting loss is less than taxable loss, then deferred tax liability is created. Next point, last point. If accounting loss is more than, if accounting loss is more than taxable loss, if accounting loss is more than what beta? Taxable loss. If accounting loss is more than taxable loss, then deferred tax asset is created. So getting the point, everybody? All of us please reply. Done. So these are the interesting points what we should know with respect to AS22. But now point which I'll make you write is something like this. I told you about something called tax expense, current tax, deferred tax. Write one line. Tax payable on taxable income. Tax payable on taxable income. Tax payable on taxable income. Tax payable on taxable income is known as what beta? Is known as current tax. Is known as current tax. Clear? Is known as what beta? Current tax.
Next point. Current tax. Current tax. Current tax plus or minus deferred tax. प्लस और माइनस, बिकॉज माइनस भी हो सकता है, माइनस भी होगा तब अपन ज्यादा पे कर रहे तो बराबर ना. करंट टैक्स प्लस और माइनस डेफर्ड टैक्स इज इक्वल टू क्या बोलते उसको, टैक्स एक्सपेंस. दोस्त समझे क्या? एवरीबॉडी प्लीज रिप्लाई. पक्का क्लियर? टेक दिस एग्जाम्पल. Example 1, take it. क्या हो बेटा? Accounting profit is 8 lakhs, profit as per tax is 6 lakhs, and rate is 30%. And 30% of 6 lakhs is 1.8 lakhs. That is what we will pay to government. What we are paying to government, that is called current tax. And current tax plus your deferred tax, it will become your tax expense. Deferred tax. 2 lakh into 30%, that is 60,000, that is called deferred tax. I'm sure we are clear with this example, everybody? Done? Write one note. Write one note. AS22. AS22 does not deal with. AS22 does not deal with AS22 does not deal with permanent differences. AS22 does not deal with permanent differences such as TDS not done at all. Correct, no? Example I told you already. TDS not done at all. Next, comma. Standard deduction under section 24A. Heard this 24A? हाउस प्रॉपर्टी में मिलता 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन. इनकम टैक्स में मिलता क्या ऐसा? नहीं. I mean sorry, अकाउंट से मिलता क्या ऐसा? That's only in taxation. Standard deduction at 24A. Comma. Presumptive income under section 44 AD, ADA and AE. सुने क्या बेटा? AD for business, ADA for professional, AE for applying, hiring or leasing goods carriage. Presumptive income
under section 44 AD, ADA and AE. Capital gains, indexation. I hope you would have heard in capital gains that if asset is long term, we take something called index cost to acquisition. There you have some concept called CII in there of transfer, something is there. Clear, no? But all that is not there in accounts. सुने आप लोग टैक्स क्लास में? नहीं सुने आप लोग? नहीं सुने? नहीं पढ़ा आपको? So are we clear with this point, everybody? Example 2. हाँ? क्या? Example 2. ये example लिखना है आपको. क्या? परमानेंट डिफरेंस में क्या? हाँ, पेनाल्टी भी लिख सकते हैं आप. पेनाल्टी भी लिख लो. परमानेंट डिफरेंस यू कैन राइट पेनाल्टी ऑल्सो. हाँ, ये लिखना है, ये वाला पार्ट. Accounting income, taxable income, DTA, GTL. Online friends, are you guys totally clear? Please confirm everyone once. I said online friends. Yes, good. Friends, done? You're talking means you finished writing. ठीक है, that's it. कौन सा? ये लिखे ना भाई, पहले जो लिखे वही था. कौन सा वाला? Sir, listen. Now I'll tell you something important. Please listen. This you would have not heard in your tax class also. This you would have not heard in tax class also because that element is not there at CA Inter taxation syllabus. What is that? Let me tell you. That is there for you at CA final level. But still let me tell you that because that's relevant for your accounts. Ready? Listen. In case of companies, my dear friends, there is one concept known as MAT. MAT stands for minimum alternative tax. Minimum alternative tax. And this minimum alternative tax is paid. This minimum alternative tax is paid as a percentage of book profits. And how to compute book profit, you learn that in CA final. Don't worry at all. But what is relevant for you from accounting point of view, that only I'll teach you. Yeah? On book profit,
some percentage we are required to pay as what, my dear friends? MAT. Now listen very clearly. Carefully listen, everybody. Sir, let us say accounting income, don't talk please, is 100. Taxable income is 120. Book profit 200. Okay, my dear friends, listen very clearly. Tax rate is 30% and MAT rate, what is MAT full form beta? Minimum alternative tax is, let us say, 18%. I'll make this as 110. Minimum alternative tax is 18%. ठीक है ना बेटा? दोस्तों, please tell me how much is current tax beta? Other words, in simple line to ask you, what is the tax as per income tax profit? The tax as per income tax profit is 33. The tax as per income tax profit is 33. But what is the MAT we are supposed to pay? 36. Sir, MAT full form only says, I repeat once again, MAT full form only says minimum alternative tax. Minimum alternative tax. That means government is telling at any given point of time, minimum you have to pay this much to government. So, naam mein ye minimum alternative tax means at any given point of time, minimum this much you have to pay to the government. That's why the name only says minimum alternative tax. Got my point, everybody? Now tell me, think properly and tell me what will be your current tax beta. Technically, your current tax will be 36. Bolo, speak out. What will be your deferred tax? In this example, deferred tax is technically 6. How 6? Because accounting income into tax rate. 100 to 30% is 30. मतलब अकाउंट्स के प्रॉफिट के हिसाब से आपको भरना चाहिए था 30, पर आपने एक्चुअली भरे 36, तो 6 हो गया आपका डेफर्ड टैक्स. Assuming that it is on account of time differences only. Students do not ask, सब परमानेंट है तो क्या? अरे परमानेंट है तो अपन बात ही नहीं करते ना रेस 22 के बारे में. Friends, getting my point, everybody? Sir, please speak out. But for presentation purpose, for what beta? Presentation purpose, what we will write is tax expense is equal to current tax plus or minus deferred tax plus excess of MAT over normal tax. Excess of MAT over what beta? Normal tax. And law told current tax, you please take it as 33. Excess of MAT over normal tax, you please take it as 3. Sir, excess of MAT over normal tax is 3 only, no? Normal tax कितना है? 33 ना? अरे यार, normal tax is 33. So for clarity, here I'll write the word. This 33, I'll write the word, what beta? Normal tax. And 36 is nothing but MAT. Speak out. For presentation purpose, we will show the current tax is what? 33. Current tax is 33. And excess of MAT over normal tax is how much? 3. Minus deferred tax 6. Technically, this becomes 30.
and 30 is nothing but 100 into 30%. नहीं समझे ना आप लोग कुछ भी? सुनो, वापस बोलता सुनो सर, अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट कितना है? 100, उसके ऊपर 30% कितना है? 30. मतलब गवर्नमेंट को अगर इनकम टैक्स करके कुछ रहता ही नहीं था, अलग प्रोविजंस, तो अपन सीधा 30 रुपीज गवर्नमेंट को पे करते थे. बट इनकम टैक्स के चक्कर में हम लोग कितना भरना पड़ रहा है? 33. और मैट के चक्कर में और कितना बढ़ा? 3 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा. 33 तो नॉर्मल टैक्स हो गया, 3 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गया. अपन ज्यादा पे कर रहे, कम पे कर रहे? बोलो भाई. मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा ना, एसेट को तो लेस ही करेंगे ना. तो -6 ले लिया उसलिए मैंने. +6 क्यों लेता भाई? सर, getting my point everybody? That becomes my tax expense. For presentation purpose, this is how we'll show. We have interesting questions in the material. All the questions we'll discuss. Don't worry. Are we clear, everyone? All of us? Put the heading in your book. MAT. M-A-T. Match. MAT. Title: Minimum Alternative Tax. Minimum Alternative Tax. Yes बेटा. गवर्नमेंट 36 पे करेंगे. See, income tax only says, I repeat again, income tax only says if your normal tax is less than MAT, please pay MAT. If normal tax is more than MAT, please pay normal. Because logic is simple that MAT का नाम ही है minimum alternative tax. तो गवर्नमेंट बोल रहा है हमको कम से कम इतना मिनिमम तो चाहिए. नॉर्मल टैक्स कितना है आपका? 33 ना. 33 मत भरो भाई, 36 भर. अगर नॉर्मल 33 की जगह 39 आता तो 39 पे कर, विच इज हायर टेक्निकली. एंड मैट का फुल फॉर्म है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स. इतना तो कम से कम पे करो. समझेगा बेटा? क्या लिखे? हेडिंग लिखे मैट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स. फर्स्ट पॉइंट, दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली फॉर कंपनीज. This concept is only for companies. This concept is only for companies. Next line. If normal tax is more than MAT, got it my dear friend? If normal tax is more than MAT, if normal tax is more than MAT, then normal tax is to be paid. If normal tax is more than MAT, then normal tax is to be paid. Next point. If normal tax is less than MAT, if normal tax is less than MAT, if normal tax is less than what beta? MAT. Then what is to be paid beta? MAT is to be paid. Then MAT is to be paid. I think you got the logic everybody? All of us. MAT का full form क्या है बेटा? Minimum Alternative Tax. सर अगर MAT का काने रहता नहीं है, how do I write my tax expense? Tax expense is nothing but current tax plus or minus deferred tax. ये तो ऑलरेडी मैंने लिखा है आपको. मैट का कहानी है, इसलिए एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ रहा है इधर? एक्सेस ऑफ मैट ओवर नॉर्मल. आई थिंक वी आर क्लियर. एक्स्ट्रा 3 रुपए भरना पड़ रहा ना मैट के चक्कर में. टेक द एग्जाम्पल. टेक द एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स. कम ऑन प्लीज. इट्स ऑल फॉर योर बेनिफिट, सो प्लीज कोऑपरेट. Once you write this, we'll start discussing questions.
Tax as per income tax profit. Tax as per income tax profit is 33. सर अल्टीमेटली आपका टैक्स एक्सपेंस जो फिगर रहता ना वो आपके अकाउंटिंग इनकम इंटू टैक्स रेट से मैच होना चाहिए. बेसिक लॉजिक. अकाउंटिंग इनकम कितना है? 100 रुपए. 100 का 30% कितना है? 30. वो 30 आना चाहिए टैक्स एक्सपेंस. समझ गया प्रेजेंटेशन? सर अल्टीमेटली वी आर अकाउंटिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड टैक्स ओनली, राइट? ऑन अकाउंट ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस. एंड टू present properly we are accounting for deferred tax. Ultimately your tax expense will match with your accounting income into tax rates. Accounting income into tax rate is 100 into 30% is 30. That will match with your tax expense. Final story वही है. घूम फिर के उधर ही आने वाले हम लोग लास्ट. बोला दोस्त क्या डाउट है? Tax as per income tax profit. Tax as per income tax profit is equal to 33. नॉर्मल टैक्स. मैट 36 है. डेफर्ड टैक्स 6 है. और जो टैक्स एक्सपेंस जो है दैट विल मैच विथ योर अकाउंटिंग इनकम इनटू टैक्स रेट. वो माइनस क्यों करे? 6 ऐड क्यों नहीं करे? वो डेफर्ड टैक्स असेट है यार, खत्म है वो कहानी. स्टूडेंट आस्किंग असेट है तो माइनस क्यों? बोलो बेटा, आप बोलो. असेट है तो माइनस क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एग्जैक्टली क्योंकि ऑलरेडी अभी वो पे कर दिया अपन. एक्चुअली सच बोलो तो मैडम सुन लो ना एक बात, छोटी सी बात. अपने को कैसे समझना है ये चीज मैं समझाता हूं आपको. सिंपल वे में बोलता, अगर टैक्सेशन में अकाउंट्स में फर्क नहीं होता, सुनो मैं किसके लिए बोल रहा हूं, मेरे लिए बोल रहा क्या? अगर अकाउंट्स में टैक्सेशन में फर्क नहीं होता, गवर्नमेंट को कितना पड़ते थे आप? सिर्फ 30 रुपए पे करते थे. ये दोनों के फर्क के चक्कर में अपन ज्यादा पे कर रहे या कम पे कर रहे? नहीं, इस केस में ज्यादा पे करे. नॉर्मली ज्यादा या कम पे करेंगे. वो ज्यादा या कम क्यों आ रहा है? वो तो परमानेंट का फर्क हो सकता है या थोड़ा अभी का फर्क हो सकता है. परमानेंट का फर्क है, गया बाढ़ में, गया तेल लेने. अगर टेम्पररी का फर्क है विच इज टेक्निकली कॉल्ड टाइमिंग डिफरेंस, फॉर दैट विल रिकॉर्ड डेफर्ड टैक्स. आज ज्यादा पे कर दिए तो असेट, आज कम पे कर दिए तो लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मतलब और भरना है तो ऐड करो. असेट मतलब ऑलरेडी पे कर दिए तो लेस करो. Are we clear with this? Done. Open your material. क्या हुआ? ब्रेक? आपको सर ब्रेक देते क्या रोज? क्या टाइम पे? एक 4 बजे, एक 5 बजे, हाँ, और एक 6:45 बजे, फिर 5:15 बजे एक. कैसे यार? सच में देते हैं? चाहिए क्या ब्रेक अभी आपको? इतना मेहनत करे क्या? ये पॉइंट्स देखने के बाद ब्रेक लेंगे, क्वेश्चंस बाद में करते हैं. ठीक है? देखो सर, अंडर इनकम टैक्स एक्ट, tax on income is payable in accordance with provisions of what act beta? Income tax act. Prior to age 22,
tax on income was being provided in the books under a tax payable method. Industrial, business and commercial enterprise follow what method? Accrual system of accounting. Accrual is one of the fundamental accounting assumption. Under accrual system, tax on income should be provided with reference to accounting income and not with reference to what? Taxable income. Next line, very, very important line. There are several areas where accounting income and taxable income significantly differ. Obviously, house property 30% reduction, वहाँ पे यहाँ पे नहीं है. Indexation on capital gains, वहाँ पे यहाँ पे नहीं है. Next, AS22 provides the base for providing tax on income with reference to accounting income rather than taxable income and properly account for differences. Accounting income मतलब profit as per accounts, taxable income मतलब profit as per income tax. ये सब लिखा है मैंने आपको आज. So what summary will be easy for you to go through. Next, objective to prescribe accounting treatment for taxes on income. Tax on income is one of the significant items in the statement of P&L. In accordance with matching concept, tax on income are accrued in the same period as the revenue and expense to which they relate. Scope, this statement should be applied in the accounting for taxes on income. This include determination of amount of expense or saving related to taxes on income in respect of an accounting period and disclosure, highlight that word, disclosure of such an amount in the financial statements. Example में आपको दिखाना है client का P&L, दिखाना आपको current tax, deferred tax. Next, definitions, सब पता है अपने को. Accounting income, tax expense, current tax, पता है ना बेटा? Next page, timing difference, बोलो, what's timing difference, बोलो. Timing differences are those differences which originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent period. ये नोट्स में लिखा है आपको मैंने, अभी जो समरी बना है उसमें लिखे ना अपन. Permanent difference are those which will not reverse. हो गया ना कहानी? Permanent difference, timing difference, छोड़ो. Next page, recognition. Important, put a star mark. Please put a star mark for recognition. Tax expense for the period comprising of what beta? Current tax and deferred tax. My dear friends, I hope this point has gone directly into your brain. Tax expense is nothing but your current tax and deferred tax. दोनों मिलके ही tax expense बनेगा ना बेटा. और आप देख भी सकते हो वहां पे liability है तो minus liability, also there is asset. So get back. Where are we? Sit down. Deferred tax should be recognized for all the timing differences, subject to consideration of what? Prudence. Next point, very important. Put a star mark. Deferred tax asset. So deferred tax asset मतलब क्या मीनिंग है? आज अपन टैक्स ज्यादा पे कर दिए, मतलब फ्यूचर में जाके कम होने वाला है ना. Deferred tax asset should be recognized and carried forward only to the extent that there is what, sir? Reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which deferred tax asset can be realized. मतलब ऐसा होना चाहिए कि आगे जाके आपका इनकम रहेगा और टैक्स कम रहेगा, तभी आज के दिन जो ज्यादा पे करे उसको हम बोलेंगे एसेट ना यार. Ultimately there should be an economic benefit which will come to us in the future. Ultimately, to call it an asset, there must be an economic benefit which will come in the future. Sir, clear with this point? Next, if an enterprise has unabsorbed depreciation, do you know what is unabsorbed depreciation? If there is a loss, what is that section number? Wow, very good. Unabsorbed depreciation means if there is a loss coming because of depreciation, that is called unabsorbed depreciation. Depreciation which could not be absorbed because of lack of profits or carry forward of losses under tax laws. Deferred taxation should be recognized only to the extent there is what, sir? Virtual certainty. That means there is a high possibility supported by convincing evidence. Highlight that word, come on. Only to the extent that there is a virtual certainty
supported by convincing evidence that there will be sufficient future taxable income will be available against which deferred tax asset can be what beta realized. Got the point everybody? अगर लॉसेस चलते जा रहे आज डेफर्ड टैक्स असेट जो पे कर दिए अपन एक्स्ट्रा पे कर दिए फ्यूचर में कम पे करना चाहिए ना, फिर कम पे मतलब फ्यूचर में इनकम दिखना चाहिए, इनकम है पर टैक्स कम पे करें तभी तो आपका असेट यूज होगा ना. अरे यार सर, when will you sir, repeat once again one line. When will you enjoy the deferred tax asset? When will you enjoy is today you paid more, tomorrow next year's there is proper income but still you are paying less, that means you enjoyed. No, tomorrow there is no income at all, तो enjoy किधर करेंगे सर? समझ में आ रहा है आपको? Everyone sir, come on. So we will recognize only when there is what, my dear friends, read out, only when there is virtual certainty supported by convincing evidence. Clear with that point? Next line. Measurement. क्या हुआ दोस्त इसके बारे में? Measurement. Current tax should be measured at the amount expected to be paid or recovered from taxation authorities using applicable rate. Deferred tax asset and liability should be measured using the tax rate and the tax loss, ये highlight करो, that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. मतलब 31st मार्च को जो टैक्स लॉस एग्जिस्टिंग है वो फॉलो करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट, डेफर्ड टैक्स असेट, ये ओवर एक्शन मत करो. Deferred tax asset and liability should not be discounted to their present value. Don't do the discounting and all. This is not your mathematics to do discounting. So discounting मतलब मालूम क्या? Present value, future value. वो discounting मत करो उसको. हाँ, ये तो आपको ऑलरेडी पता है मैंने. Tax expense and tax saving. ये लिखा है मैंने आपको. If this is more, that is less. Next. Review of deferred tax asset. Deferred asset आप बनाए, अच्छी बात है, पर उसको रिव्यू भी तो करो हर साल. सर आपका AS28 हो गया क्या? Impairment. Whenever there is asset in the balance sheet, if market value is coming down, we'll review that asset, and if the asset value is less than the carrying value, if the carrying value मतलब balance sheet में उसका 10 लाख रुपए है, market में 6 लाख रुपए है, then we'll charge something called impairment by reviewing the financial statements. See that word? Carrying amount of deferred tax assets should be what beta? Reviewed at each balance sheet date. An enterprise should write down the carrying amount of deferred tax asset to the extent that it is no longer reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future income will be available against which asset can be realized. अगर आप asset को यूज नहीं कर पा रहे तो राइट ऑफ करना P&L में. फिर asset को यूज ही नहीं कर पा रहे तो P&L में राइट ऑफ करेंगे ना यार. Any such write down may be reversed to the extent it becomes what beta? Reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available. Ultimately, आज एक्स्ट्रा टैक्स पे करें मतलब कल के दिन आपको यूज होना चाहिए. डिस्क्लोजर अपन बाद में देखते हैं. We'll see the disclosure after some time. Done. Take a break. After break, we'll discuss some interesting questions. Clear? क्या हुआ, ब्रेक गलत टाइम पे दिया क्या? जल्दी हो गया? हाँ ठीक है, ले लो, कोई बात नहीं, ऐसे होता है. Get back, my dear friends. Come on. Please look at the practical questions now. Sir, in your material, please look at your material, please. Sir, if you properly cooperate, in a very short time, you can complete this easily. Distinguish between time indifference and permanent difference referred to in AS22, giving 2 examples each. बोलो बेटा, what is time indifference? Originate in one period and capable of reversal in subsequent period. Example देख सकते हैं आप, depreciation, carry forward of losses. Statutory dues under 43B. 43B in income tax says some expenses are allowed as deduction only if they are actually paid on or before due date of return of income. Example, municipal tax, employer contribution to PF. सुने आप लोग टैक्स क्लास में?
पढ़ा है आप लोगों को? नहीं, मेरे को जहां तक पता है पढ़ाए होंगे। ठीक है, कल सुबह बात करेंगे। परमानेंट डिफरेंसेस आर डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम originate in one period but do not reverse subsequently. Example, agriculture income, it is exempt in income tax under one section called 10(1) if it is agriculture income from a land in India. Donations or contributions disallowed for tax purpose. If it is political party and all, we can take, but normally we can't take. Political party also will take deduction in chapter 6A. For information, there is something called 80GGB and 80GGC. GGB for company to political party, GGC other than company to political party. नहीं मालूम, बोले आंसर कैसा है? सेल्फ स्टडी कैसा है रे? हाँ? See the second question. Interesting. See that. सर केयरफुली प्लीज लिसन बेटा, सोच समझ के जवाब देना। ओमेगा, डोंट टॉक प्लीज। ओमेगा लिमिटेड is working on different projects, don't talk please, which are likely to be completed within how many years? 3 years. It recognizes revenue from these contracts on percentage of completion method for financial statement 6, 7, 8 for 11 lakhs, 16 lakh, 21 lakhs. तो अकाउंट्स के हिसाब से इनकम कितना दिखा है बेटा? 11 लाख, 16 लाख, 21 लाख, उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग इनकम। अब देखो, बट फॉर इनकम टैक्स पर्पस इट हैज अडॉप्टेड कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड। अब देखो क्या करना है, जो भी मेथड है वो। इन अकाउंट्स देयर इज समथिंग कॉल्ड AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लीज, अंडर विच इट इज रिकॉग्नाइज्ड 7, 18, 23। सर टोटल देखेंगे तो टोटल 48 लाख से, उधर भी 48 लाख से, इधर भी 48 लाख से, बट ईयर फिगर डिफरेंट है, मतलब इट इज अ टाइम इन डिफरेंस। तो डेफर्ड टैक्स क्रिएट करेंगे ना। फर्स्ट ईयर अकाउंट्स में 11 है, टैक्स में 7 लाख है, विल क्रिएट डेफर्ड टैक्स। अरे सोच के बोलो रे भाई, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। सी द फिगर हियर, कम ऑन, टाइम इन डिफरेंस। फर्स्ट केस 4 लाख का फर्क है, we created deferred tax liability 1,40,000. Tax rate is 35%. Understood? किधर है ध्यान? तो देख, ध्यान दो फिर। 4 लाख का 35% is 140. करेक्ट फ्रेंड्स? सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का 16 लाख है, टैक्सेबल का 18 लाख है। डिफरेंस क्या है बेटा? 2 लाख। 2 लाख का 35% 70,000। बट समझे क्या बेटा, ये 70,000 कैसा है बोलू क्या? 4 लाख का 35% फिगर आया ना, उसमें से 70,000 अभी हम रिवर्स कर देंगे, जो बचा फिगर है वो 70,000। बिकॉज फर्स्ट वी क्रिएटेड वन डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 140, उसमें अभी 70 रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट 21 लाख, 23 लाख, टाइम इन डिफरेंस कितना है बेटा? बैलेंस क्या फिगर लिखे? नील। बैलेंस नील क्यों लिखे? 2 लाख का ही फर्क था, वो 2 लाख अभी क्लोज हो गया, नेट डिफरेंस विल बिकम नील। मतलब पहले हमने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाया था 1,40,000 का, अगले साल वो 70,000 कम हो गया, अगले साल 0 हो गया। डेफर्ड टैक्स तो 0 होगा ही ना यार। स्टूडेंट आस्क, 0 नहीं हुआ तो? 0 नहीं हुआ मतलब वो टाइम परमानेंट डिफरेंस है, वो परमानेंट डिफरेंस मतलब AS22 आता ही नहीं। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? व्हाट आई विल वांट टू टेल यू इज, मेरी बात सुन लो प्लीज, एक लास्ट पॉइंट, फिर मैं आगे जाऊंगा। द लास्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज, यहां पे 16 लाख 18 लाख है ना, आप ये मत बोलो 2 लाख इंटू 35% विच इज 70,000 आई विल क्रिएट डेफर्ड टैक्स एसेट, मत बोलो। डोंट टेल डेफर्ड टैक्स एसेट विल कम। What we'll tell is deferred tax liability what we created that will be reversed. इसलिए 140 70 हो गया, 70 0 हो गया, 70 0 हो गया। समझे क्या बेटा? एवरी वन सर? अब एक बार
नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले प्रीवियस पेज में डिस्क्लोजर फर्स्ट पॉइंट देखो. An enterprise should offset what, sir? Assets and liabilities representing current tax. If the enterprise has what, sir? Legally enforceable right to set off and intends to settle the asset and liability on what basis? Net basis. An enterprise should offset deferred tax asset and deferred tax liability if they have a legally enforceable right, and deferred asset and liability relates to taxes on income levied by same governing taxation laws. Getting my point, everybody? और नीचे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा वो पॉइंट. Deferred tax asset and deferred tax liability should be distinguished from asset and liability. मतलब normal asset should be shown separately, deferred tax should be shown separately. एक सेकंड, एक सेकंड. आगे जाने से पहले सर ये हो गया P&L अकाउंट, ठीक है, और ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट ऊपर है शायद. सर ये हो गया बैलेंस शीट, दिख रहा है ना बेटा? दोस्तों बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं असेट्स में फिक्स्ड असेट, टैंजिबल असेट, नीचे क्या दिखा है? डेफर्ड टैक्स असेट. सो दैट इज शोन सेपरेटली, दैट इज शोन सेपरेटली. सब मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं बेटा आपको. मैंने समझ में आ रहा क्या बेटा? अब वो लाइन पढ़ो वापस, अभी वापस पढ़ो वो लाइन. क्या बोला उसने? डेफर्ड टैक्स असेट एंड लायबिलिटी शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम असेट्स एंड लायबिलिटीज. मतलब डेफर्ड टैक्स को अलग से दिखाना ही पड़ेगा. नेक्स्ट. एंड दे शुड बी डिस्क्लोज्ड अंडर, अभी दिखा मैंने आपको, डिस्क्लोज्ड अंडर सेपरेट हेडिंग, सेपरेटली फ्रॉम करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी. अभी दिखा बैलेंस शीट आपको मैंने, वो तो लास्ट ईयर साइन करे सो बैलेंस शीट है वो. प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट दिखा मैंने आपको. द ब्रेकअप of deferred tax asset and deferred tax liability into major components of respective balances should be disclosed in what? Notes to accounts. देखो बेटा अभी सर प्लीज, क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ रहे आप? देखो deferred tax, वहां पे जो 8 दिख रहा है ना बाजू में, वो नोट नंबर है, नोट नंबर 8, नोट नंबर 8. deferred tax asset फिगर अलग से दिखाते हैं. समझे क्या बेटा? एवरी वन सर, एंड इट्स मैंडेटरी टू शो कंपैरेटिव्स. शायद आप सुने होंगे ये, तो ये ईयर और पिछले साल का कंपैरेटिव देना मैंडेटरी है. वो कंपनी सेट का रूल बन गया अभी वो, ठीक है. आ जाओ बेटा, गुड. ब्रेकअप इज मैंडेटरी. नेक्स्ट लाइन. नेचर ऑफ एविडेंस. अरे प्रैक्टिकल समझना जरूरी है बेटा, इसलिए मैं प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट लेके आया, तभी अपने परफेक्शन आएगा ना यार. नेचर ऑफ एविडेंस supporting the recognition of deferred tax asset should be disclosed if an enterprise has unabsorbed depreciation or carry forward of losses. Done. चलो proceed. कौन सा क्वेश्चन हो गया? सेकंड वाला हो गया ना? थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, बराबर जवाब चाहिए मुझे. डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स. देखो बेटा, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स कितना है? 2 लाख. डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना है? अब मुझे बोलो डेप्रिसिएशन किस में ज्यादा है? इनकम टैक्स में ज्यादा है. इनकम टैक्स में ज्यादा है मतलब इनकम टैक्स में प्रॉफिट कम है. कम में मतलब हम टैक्स कम पे करेंगे. कम पे करेंगे मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. सी, दैट्स क्लैरिटी. नेक्स्ट लाइन. अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स. सॉरी, अनअमोर्टाइज्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एज पर टैक्स मतलब अभी तक ये 30,000 एक्सपेंस नहीं लिए. नहीं लिए ना? नहीं लिए मतलब क्या? प्रॉफिट ज्यादा है. बड़ा है नहीं रे, ज्यादा है. प्रॉफिट ज्यादा है. प्रॉफिट ज्यादा है मतलब क्या? टैक्स ज्यादा भरे. टैक्स ज्यादा भरे मतलब क्या? डेफर्ड टैक्स असेट. चेक कर लो, पहले वाला डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, दूसरा वाला डेफर्ड टैक्स असेट. और क्वेश्चन में परसेंटेज दिए 50%, उसका 50% निकाल लिया अपन. I think you got the clarity. You might get one doubt and ask me one question. If I am not wrong, your question is what I'll guess. Your question is, सर पिछले क्वेश्चन में आपने बोला लायबिलिटी रिकॉर्ड करे, उसको रिवर्स करेंगे. इस क्वेश्चन में आप अलग अलग ऐसा क्यों लिख रहे? आपका डाउट यही है क्या बाय एनी चांस? इसका आंसर ये है, पिछले क्वेश्चन में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 इज गिवन. 1 year we created liability, next year we'll reverse that liability.
बिकॉज टाइमिंग डिफरेंस, नेट एफर्ट 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दो अलग अलग पॉइंट से दो अलग अलग पॉइंट का वो पूछ रहा है इफेक्ट क्या है। तो ये पॉइंट का लाइबिलिटी ये पॉइंट से रिवर्स नहीं होता ना, नेक्स्ट ईयर रिवर्स होता था। यू गॉट योर आंसर माय डियर फ्रेंड? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, अरे मैथ का क्वेश्चन है यार, अच्छे से बोलना आंसर। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है बेटा? बुक प्रॉफिट एज पर मैट। दोस्त ऐसा क्वेश्चन में देते, बुक प्रॉफिट एज पर मैट, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। बेटा बोलो, बेटा बोलो बोलो बोलो। अभी क्या करेंगे अपन? टैक्स एज पर अकाउंटिंग प्रॉफिट 15 लाख का 30%, 4.5 लाख। टैक्स एज पर इनकम टैक्स प्रॉफिट 1.5 लाख का 30%, 45,000। मैट हो गया इसका 7.5%, 65, 625। दोस्तों टैक्स एक्सपेंस इज इक्वल टू करंट टैक्स प्लस deferred tax, and deferred tax will be 4,05,000. I think you understood. Very easy working. नीचे देखो, ये जो लास्ट वर्किंग है जो मैं बताया आपको वैसे ये नहीं है, देख लो बेटा। करंट टैक्स विच इज 45,000 प्लस deferred tax 4,05,000 प्लस excess of MAT over current tax. ये मैं एग्जाम्पल दिया था आपको सेम टू सेम, मतलब नंबर्स अलग है, मतलब कॉन्सेप्ट तो एक ही है। अरे समझे ना यार? दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रिलियंट क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ए सिंपल क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स कितना है बेटा? 2.5 लाख। टैक्स 5.5, मतलब टैक्स में ज्यादा लिए तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अनअमॉर्टाइज्ड प्रीमियम एक्सपेंस सेम करें ना अपन ऑलरेडी, 40,000। इसका हम क्रिएट करेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स। मैडम आई थिंक यू आर क्लियर नाउ। ये साल में क्रिएट करके अगले साल में जाएंगे तो उसको रिवर्स करेंगे, बट ये साल में दो अलग अलग पॉइंट है तो इसका लाइबिलिटी इसका एसेट्स। सर आई होप यू आर क्लियर। दिस क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 और 5 दोनों सेम है भाई, ठीक है ना? 6th क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन टाइमिंग डिफरेंस एंड परमानेंट डिफरेंस। आई थिंक वी कैन हैप्पीली राइट। सर बुक में ऐसा वापस रिपीट करने का रीजन ये था, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है मई 2018 में 5 मार्क को आया, और इसके ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। एक बार ऐसा आया, एक बार ऐसा आया, तो एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आता है 4 मार्क या 5 मार्क, जो बहुत ही स्कोरिंग है। I hope we are getting full clarity on these points. चलो 7th question बेटा। 7th question will be same like your 4th question. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है ये भी। अकाउंटिंग प्रॉफिट 9 lakhs, बुक प्रॉफिट 525। इसको ऊपर क्या निकालेंगे अपन? मैट। प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स 95,000। दोस्तों आई थिंक यू गॉट द वर्किंग। Everybody, please reply, sir. All of us. That's about your question number 7. Sir, समझे क्या आंसर? I'll dictate one question, you please solve. Determine deferred tax asset, determine deferred tax asset or liability. Deferred tax asset or deferred tax asset or liability. And also determine tax expense, and also determine tax expense. बेटा टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है?
Tax which is debited to your P&L. दोस्तों correct no? Friends, write down. Accounting income. Accounting income 6 lakhs. Accounting income 6 lakhs. Profit as per income tax. Accounting income 6 lakhs. Profit as per income tax 3 lakhs. Tax rate 30%. Book profit 10 lakhs. Book profit 10 lakhs. MAT rate. Book profit 10 lakhs. MAT rate 10%. ठीक है? Simple question. Solve बेटा. हो गया क्या? बताओ बेटा, what is tax as per taxable income? What is that? 90,000. And my tax expense is nothing but current tax plus what beta?
deferred tax. Correct? What is my tax expense? My tax expense is nothing but tax as per accounting profit. What is tax as per accounting profit? Sorry? 1 lakh is equal to 90,000 प्लस डेफर्ड टैक्स. प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा ना बेटा? आपकी बुक में भी है बेटा ऑलरेडी ये. My deferred tax is nothing but 90,000. But here there is a problem. What is the problem? MAT. What is MAT? MAT is nothing but 1 lakh. So my tax which will be debited to P&L will be current tax plus deferred tax plus 10,000. This 10,000 is what? 10,000 is what? Excess of MAT over current tax. सर जब MAT आएगा तभी ये कहां आता है. Clear my dear friends? So this figure will be 1,90,000. I hope we are clear. In fact, अपने यहाँ पे प्रीवियस जो कोई एग्जाम्पल लिखे ना उसमें टैक्स एक्सपेंस की जगह छोटा चेंज करते हैं अपन. टैक्सेस डेबिटेड टू पीएल. और जब टैक्सेस डेबिटेड टू पीएल लिखेंगे ये फिगर जो है डेफर्ड टैक्स का फिगर वो 3 हो जाता है. दिस फिगर विल बिकम 33. अल्टीमेटली जब मैट आता तभी ज्यादा टैक्स आएगा. सर जनरली करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स. आई रिपीट अगेन. Generally, current tax plus deferred tax total will match with your tax as per accounting profit. Accounting का जो profit रहेगा that into tax rate that will match with your current tax plus deferred tax. But जब MAT पिक्चर में आता है तो ये फिगर बढ़ जाता है. समझे क्या? ये छोटा प्रेजेंटेशन चेंज करो आपके एग्जाम्पल में. शायद आप एग्जाम्पल लिखे होंगे ना, ये वाला ऊपर वाला. ये एग्जाम्पल आप लिखे शायद, उसमें वो लैंग्वेज चेंज कर लो. टैक्सेस डेबिटेड टू पीएनएल कर दो. सर ये एग्जाम्पल नोट्स पे लिखा था मैंने आपको. फर्स्ट लिखा था है या नहीं? चेंज कर लिया क्या? ये लिखा ही नहीं क्या? हाँ तो चेंज कर लो थोड़ा सा. अरे यहां पे टैक्सेस डेबिटेड टू पीएनएल कर दो उसको. सर ये वाला टैक्सेस डेबिटेड टू पीएनएल कर दो. अगर टैक्सेस डेबिटेड पीएनएल कर रहे हैं वो डेफर्ड टैक्स आपका 3 बन जाएगा. तो प्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा. लास्ट पे 33 इसलिए आया क्योंकि 100 पे 30% 30 प्लस एक्स्ट्रा 3 रुपए पे करना पड़ रहा है डेफर्ड मैट की वजह से. समझे क्या आपको? फ्रेंड्स, द क्वेश्चन व्हाट आई डिक्टेटेड नाउ, इज इट क्लियर फॉर एवरीबॉडी? क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको ज्यादा क्लैरिटी बैठ रहा है दिमाग में? फ्रेंड्स प्लीज रिप्लाई एवरीवन. और बेटा वापस बोलता हूं, अगर क्वेश्चन में मैट नहीं है, योर करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स जो भी फिगर आएगा दैट विल मैच विथ योर टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट. दैट विल ऑलवेज मैच विथ टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, बट विल नॉट मैच व्हेन मैट विल कम. जो एक्स्ट्रा फिगर है उसको अलग से ऐड करना ही पड़ता है. सर अगर सिंपल सी बात है यार, अगर वो 10,000 नहीं रहता, सर ये जो क्वेश्चन आपको डिक्टेट किया अभी, अगर 10,000 नहीं रहता तो आंसर कितना आता था अपने को? 1,80,000. एंड व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना दिया मैंने? अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है? 6 लाख. 6 लाख का 30% कितना है? 180. वो 180 मैच हो जाता है एक्चुअली हमेशा. बट यहां पे मैच नहीं हो रहा है क्योंकि मैट पिक्चर में आया. मैट पिक्चर में आया तो ये मैच नहीं होता. आई थिंक वी आर क्लियर. Sir, this is only for presentation purpose. You got the logic, but it's all presentation. Next question. कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करें अपन? 7. 8th वाला सेम स्टोरी.
I'll leave it to you. Eighth question, same story beta, no change at all. Tax on accounting profit will calculate. Tax as per income tax profit, tax as per MAT. Tax expense is equal to current tax plus deferred tax. इससे अपना deferred tax figure आ गया. वो आने के बाद क्या करेंगे? What is the tax debited to P&L? Current tax plus deferred tax plus excess of MAT over current tax. सर मैं जानबूझ के आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट किया ताकि आपको क्लैरिटी आएगा. क्या हुआ? कुछ वर्किंग गड़बड़ है क्या दोस्त? कुछ आंसर गलत है क्या? डन. फ्रेंड्स, आर वी क्लियर विद दिस क्वेश्चन? बेटा बोलो ना दोस्तों. डन. क्वेश्चन नंबर 9. सर ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो ना दोस्तों. क्या हुआ अनुज? बोलना बेटा, क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 9. फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर स्टेटेड इन बैलेंस शीट ऑफ एचएस. सर बैलेंस शीट में क्या क्या है देखो. डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी है, डेफर्ड टैक्स असेट भी है. ठीक है मैडम, यू गॉट द पॉइंट नॉट? असेट इज अ लाइबिलिटी इज हियर. दैट मींस ओपनिंग फिगर्स दे आर. तो करंट ईयर जो ट्रांजैक्शंस रहेंगे उसको रिवर्स करेंगे. मतलब असेट बनाना है तो लाइबिलिटी को रिवर्स करेंगे, लाइबिलिटी बनाना है तो असेट को रिवर्स करेंगे. अल्टीमेटली नलिफाई करेंगे ना अपन. नेक्स्ट, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिपोर्टेड. डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंटिंग कितना है? 160. टैक्स में कितना है? 140. बेटा बोलो, आगे कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो आगे, इधर ध्यान दो. डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में कितना है? 160. टैक्स में कितना है? 140. मतलब टैक्स में डेप्रिसिएशन कम लिए. कम लिए मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब टैक्स ज्यादा भरने वाले. ज्यादा भरने वाले मतलब डीटीए बनाएंगे, बट डीटीए अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डीटीएल पड़ा है, तो डीटीएल को रिवर्स करेंगे. अभी देखो आंसर. फर्स्ट पॉइंट, रिवर्सल ऑफ डीटीएल. आई थिंक यू अंडरस्टूड. स्पीक आउट. एक्चुअली अपने को डीटीए बनाने का है, डीटीए बनाने की जगह हम जो ओपनिंग है उसको रिवर्स करेंगे. फ्रेंड्स, अकाउंट्स मैजिक मैन, इट्स अ ब्यूटी. गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, items disallowed for tax purpose in 1819. Sir, items what beta? Disallowed for tax purpose in 1819 but allowed in 1920. मतलब ये 20 लाख रुपए 1920 में अलाउ कर रहे, मतलब 1920 में प्रॉफिट कम है. कम है मतलब टैक्स कम पे करेंगे. कम पे करेंगे मतलब लाइबिलिटी बनाएंगे, बट लाइबिलिटी तो बनाएंगे नहीं अपन. जो असेट है डीटीए उसको रिवर्स करेंगे. रिवर्सल ऑफ डीटीए. दिख रहा है क्या बेटा आपको आंसर? दोस्तों नेक्स्ट, डोनेशन टू प्राइवेट ट्रस्ट. लेट मी टेल यू, इट इज नॉट टाइमिंग डिफरेंस, इट इज ए परमानेंट डिफरेंस. सीधा आंसर, डोनेशन इज नॉट एन allowable expenditure and income tax. It is a permanent difference and no reversal is required, because the question of reversal and all will come only in case of timing differences. क्वेश्चन अच्छा लगा आपको? इसलिए मैं सिंपल वे में समझाया. फर्स्ट पॉइंट में अपन टैक्स में टैक्स कम पे कर रहे नहीं. फर्स्ट पॉइंट में डिप्रिसिएशन ज्यादा है क्या? डिप्रिसिएशन अकाउंट्स में 160 है, टैक्स में 140 है, मतलब टैक्स में डिप्रिसिएशन कम लिए. कम लिए मतलब प्रॉफिट ज्यादा है. प्रॉफिट ज्यादा है मतलब टैक्स ज्यादा पे करे. ज्यादा पे करे मतलब डीटीए बनाना है, पर डीटीए नया नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट्स में डीटीएल पड़ा है, उसको रिवर्स करो. रिवर्स करें मतलब डीटीए बनाए ना. गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैन, ब्यूटीफुल. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. अभी वापस बोलो बेटा, डेफर्ड टैक्स ओपनिंग पड़ा है, लाइबिलिटी भी असेट भी है. मैडम क्लियर नो? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स इज व्हाट? 70 लाख. बट फॉर टैक्स, सर डोंट सी द आंसर्स, नो, सम ऑफ देम आर बिजी इन सीइंग आंसर ओनली. डोंट डू दैट बेटा. बट डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पस इज व्हाट? 42. सर बुक्स में 70 है, टैक्स में 42 है, मतलब टैक्स में डेप्रिसिएशन कम है. कम है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है. ज्यादा है मतलब अपन टैक्स ज्यादा पे करें. ज्यादा पे करें मतलब असेट बनाना है, पर अपन नहीं बनाएंगे. क्यों? ऑलरेडी डीटीएल पड़ा है बुक्स में, तो डीटीएल को. दैट्स इट. सेकंड पॉइंट, एक्सपेंस अलाउड इन 1920
सॉरी डिजर्व इन 1920 बट अलाउड इन 2021, मतलब ये साल में एक्सपेंस लेंगे, एक्सपेंस लेंगे मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब टैक्स कम पे करेंगे, कम पे करेंगे मतलब लाइबिलिटी बनाना है पर अपन नहीं बनाएंगे, जो डीटीए पड़ा है उसको रिवर्स करेंगे. थर्ड बिट, शेयर इश्यू एक्सपेंस allowed under 35D of income tax 2021, 1/10 of 70 lakh incurred in 1920, मतलब ऑलरेडी अकाउंट्स में आप 70 लाख ले लिए, ऑलरेडी अकाउंट में 70 लाख ले लिए, टैक्स में कितना ले रहे, टैक्स में कितना ले रहे, 1/10 ले रहे, 1/10 मतलब कितना 7 लाख. तो अकाउंट्स में एक्सपेंस कम है, कम है मतलब प्रॉफिट ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है मतलब टैक्स ज्यादा है, तो क्या करना है, डेफर्ड टैक्स असेट बनाना है, पर असेट अपन नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या गड़बड़ कर दिया यार, होल्ड ऑन. शेयर इश्यू एक्सपेंस अलाउड इन 35 डेज 7 लाख अलाउड है इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में 7 लाख अलाउ करे, अकाउंट्स में एक्सपेंस इज मोर, अकाउंट्स में ज्यादा है, टैक्स में कम है, टैक्स में एक्सपेंस कम है मतलब नहीं, मैं बोलता क्या हुआ इधर कहानी, सुनो 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 सर, सुनो कहानी क्या हुआ. 1920 में अपन 70 लाख इनकर करे, बराबर ना, और अकाउंट्स में ऑलरेडी अपन 70 लाख एक्सपेंस ले चुके पिछले साल ही, पर 1920 में टैक्स में कितना लिया, सिर्फ 7 लाख, मतलब टैक्स में कम दिखाए, मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखाए, प्रॉफिट ज्यादा मतलब टैक्स ज्यादा भरे, कब, पिछले साल ही, मतलब पिछले साल क्या बनाए होंगे अपन ने, डीटीए, अब वो डीटीए को अपन रिवर्स करेंगे ये साल में. सर 19-20 में अपन डीटीए बनाए ना यार, 19-20 में डीटीए बनाया अपन, वो 20-21 में उसको रिवर्स करेंगे. वापस बोलता बेटा सुन लो कहानी क्या है. सर वी आर राइट नाउ इन द ईयर 2021, ओके, इन 1920 we have taken 70 lakhs expense in accounts, but in taxation we have taken only 7 lakhs. Clear? That means in 1920 we have shown more profits. So in 1920 we created one DTA. अब अपन कौन से साल में, 2021 में थोड़ा सा एक्सपेंस अभी लिए, थोड़ा सा एक्सपेंस अभी लिए, मतलब जो डीटीए पहले बनाया उसको क्या करेंगे अभी, देखो आंसर अभी, reversal of DTA due to disallowance of full expenditure tax payable in earlier years was what beta, higher. दोस्तों पहले ऑलरेडी डीटीए बन चुका है बेटा, इसलिए अपन रिवर्स कर रहे हैं ना उसको. फ्रेंड्स प्लीज स्पीक आउट. नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेजी पॉइंट, प्लीज सी. repairs to plant and machinery were made during the year for 140 lakhs and was spread over 2021 and 21-22 equally in books. और अपन 2021 में है, अपन 2021 में ही है ना. However, entire expenditure was allowed for tax purpose in 2021. मतलब इसका मीनिंग क्या है, टैक्स में अपन ने 140 लिए, अकाउंट्स में हम लेने वाले 70 और 70, अकाउंट्स में हम लेंगे 70 और 70. बेटा समझ में आ रहा है आपको दोस्त, अकाउंट्स में हम लेंगे 70, टैक्स में लेंगे 140. तो टैक्स में क्या हुआ, ज्यादा एक्सपेंस ले लिए, मतलब टैक्स कम पे करे, तो क्या करेंगे, deferred tax liability, and deferred tax liability will create now. Don't tell DTA को रिवर्स करेंगे, रिवर्स इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज ये चालू हो रहा है ये साल में. ये रिवर्स का कहानी कब आता, पहले ऑलरेडी बन चुका है डीटीए और डीटीएल, उसको अगर रिवर्स करेंगे ये साल में तो रिवर्स कहानी आता ना यार. यही साल में ओरिजिनेट हो रहा है तो रिवर्सल का कहानी कहां से आता है, शुड आस्किंग. अच्छा इसका मतलब अगले साल में रिवर्स हो जाएगा. हाँ, you can read the line. Due to allowance of full expenditure, tax payable of current year will be what sir, less. Originating
टाइमिंग डिफरेंस। ये साल में ओरिजिनेट हो रहा है, ऑलरेडी आ गया डीटीए डीटीएल, उसको रिवर्स करेंगे। ये साल ही स्टार्ट हो रहा है, अभी नया बनाओ डीटीए डीटीएल। मजा ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्लियर ना मैडम? एग्जैक्टली, लवली पॉइंट एक्चुअली। क्या हुआ दोस्त, ऐसा क्या यू? हाँ फ्रेंड्स, अगेन आई रिपीट फॉर एवरीवन्स बेनिफिट्स, लास्ट पॉइंट में 2021 का इफेक्ट अगले साल में आने वाला है। ये 1920 का कहानी है क्या? नहीं, ये साल में ही कहानी स्टार्ट हो रहा ना, तो पहले जो डीटीए डीटीएल बना इसका कोई संबंध ही नहीं है, तो नया बनाओ डीटीए डीटीएल। पहले जो बन गया ऑलरेडी उसका रिलेटेड है तो उसको रिवर्स करेंगे। आई एम श्योर वी आर क्लियर। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स 56,000, एज पर टैक्स 38,000। मतलब टैक्स में, बोलो बेटा टैक्स में कम है तो क्या करेंगे? अपन प्रॉफिट ज्यादा दिखाए, टैक्स ज्यादा पे करे तो क्या होगा? डिफर्ड टैक्स। किधर है भाई? सीधे नेक्स्ट पेज। डिफर्ड टैक्स असेट की जगह इधर लैंग्वेज क्या है? रिवर्सल ऑफ डीटीएल। रिवर्सल ऑफ व्हाट? डीटीएल। यू माइट आस्क सर ये क्यों आ रहा है, ऐसे क्यों आ रहा है, ऐसे क्यों आ रहा है? मतलब ये डेप्रिसिएशन की कहानी है ना यार। डेप्रिसिएशन में तो हमेशा पर डिफर्ड टैक्स असेट या लायबिलिटी ईयर 1 में ही क्रिएट करते, पहले साल में ही जब डेप्रिसिएशन का फर्क आया तभी तो ऑलरेडी बन गया ना यार। अभी आप पूछ सकते हैं सेकंड पॉइंट जो है ना, नया मशीनरी जो ये साल परचेस करे इसको अपन रिवर्स नहीं करेंगे, नया बनाएंगे डीटीए डीटीएल। सर समझ रहे क्या आप लोग? नेक्स्ट लाइन, हो सी, new machinery was purchased on 1st April for 24,000, on which 100% depreciation is allowed in first year for income tax purpose, whereas SLM method is considered appropriate for accounting purpose. मतलब टैक्स में क्या करें अपन? पूरा एक साथ ले लिए तो टैक्स में एक्सपेंस ज्यादा है तो प्रॉफिट कम है तो टैक्स कम है, तो क्या करेंगे? डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्रिएशन, ये लाइन देखो बेटा, क्रिएशन ऑफ डीटीएल, एबल टू सी द वर्ड क्रिएशन। ये क्रिएशन क्यों आया? क्योंकि न्यू मशीनरी है। सर ओपनिंग का कहानी है तो रिवर्सल की बात करो, ये साल में नया कुछ आया तो नया बनाओ। सर माइट साउंड ड्रामेटिक बट इंपॉर्टेंट, तभी क्लैरिटी बैठेगा। 4 मार्क 5 मार्क, मजाक नहीं है। नेक्स्ट, गेट बैक। और क्या है क्वेश्चन में? कंपनी हैज मेड प्रॉफिट, और डोनेशन तो हमेशा सीधा का सीधा, व्हाट डिफरेंस है वो? परमानेंट, नॉट अलाउड अंडर इनकम टैक्स, तो परमानेंट है ना भाई। परमानेंट है तो उसका इफेक्ट देते नहीं अपन। फ्रेंड्स डिफर्ड टैक्स नेट इफेक्ट 0 आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट हो गया। That's the end of story of this brilliant standard called AS22, Accounting for Taxes on Income. Last but not the least, let me tell you very clearly that there is a high probability that 4 to 5 marks question can come in the examination. So students should be very clear with that. And for the last time, I'll repeat, my dear friends, already there is some opening effects of DT or DTL in the books. Then current year we will reverse. Current year some new transaction is coming. Then we will create the DTA or DTL. I think that is fully clear for everybody. Again, I am telling so that there should not be any doubt at all. And one more time I will repeat, AS22 has got nothing to do with permanent differences. It has got only to do with timing differences. So in exam when question comes, properly use the language called current tax, deferred tax, accounting income. और ये मैथ का कहानी क्लियर है क्या? जो क्वेश्चन में आपको डिक्टेट करके सॉल्व करा है वो भी क्लियर है? Thank you very much for giving opportunity to talk with you about accounting related to taxation, especially related to AS22. Special thanks to you guys and special thanks to Sushil sir for giving an opportunity to talk to you about AS22, Accounting for Taxes on Income. Thank you very much. Shivateja signing off. Take care. Bye-bye. Thank you so much.